वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी हाँ नाज़रीन, 21 अक्टूबर को वैंकूवर में पैसिफिक कॉलिसियम में कौन आ रहा है? आतिफ असलम। आतिफ असलम जो हैं वो एक बहुत बड़े लेजेंडरी फनकार हैं जिन्होंने गुलकारी में सिंगल हैंडेडली अपना नाम कमाया है। इंडिया में हो, पाकिस्तान हो या दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू और हिंदी बोली समझी सुनी जाती है उसके ये फनकार आतिफ असलम आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पैसिफिक कॉलिसियम में देखना ना भूलिएगा। शाम 8 बजे शो स्टार्ट हो जाएगा और हम चाहेंगे कि वैंकूवर के दिल अपना पाकिस्तान और दुनिया भर के और शहर बाकी कनाडा में, यूएस में जो भी करीबी शहर हैं वैंकूवर से, वो ज़रूर देखने आए। 21 अक्टूबर को लेजेंडरी फनकार आतिफ असलम वैंकूवर आ रहे हैं। हम आपको मिलेंगे वैंकूवर में 21 अक्टूबर को। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। समर गाए बगाए अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हैं। अभी सितंबर का पहला हफ्ता आया चाहता है और इस पहले हफ्ते में स्कूल के बच्चे भी स्कूल वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ होंगे। नाज़रीन, स्कूल जाने से याद आया मुझे कि पूरे कनाडा में जो स्कूलों का जो करिकुलम चेंज हो रहा है और उसमें अर्ली चाइल्डहुड या नर्सरी में या प्राइमरी स्कूल में पहली क्लासेस में, किंडरगार्टन में जिस तरह से बच्चों को नई तालीम दी जा रही है, उसमें जेंडर आइडेंटिटी के बारे में जो तालीम दी जा रही है, उसके बारे में हम मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इस्तराब में है और हम ये पूछना चाहेंगे अपने इलेक्टेड एमएलए से, एजुकेशन की मिनिस्टर जो है रचना सिंह है, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये मैंडेट ये गवर्नमेंट का है या ये इंटरनेशनल मैंडेट है या कि यूएन का मैंडेट है, जिसमें कि न्यू जेंडर आइडेंटिटी के लिए उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया है कि अब किसी को ही शी की तमीज़ नहीं होगी, वो अपनी जेंडर जो है वो बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये चीज़ मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ और ये जो पाकिस्तान में भी LGBTQ के बारे में बड़ी ओपनली बातें हो रही हैं, वो भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और हम चाहेंगे कि हमारी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, और उन्हें इस बारे में ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे माशरे में किस तरह से एक ऐसी चीज़ जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत रिप्रोडक्शन के ख़िलाफ़ है, उसको किस तरीके से इसे आगे ले जाया जा रहा है। मैं अपने देखने सुनने वालों को ज़रूर ये कहूँगा कि वो इस बारे में सोचें, डिस्कस करें और पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, ईमेल्स करें और इस बात पर, और जो वॉक्स हो रही हैं सितंबर में, उन वॉक्स का हिस्सा बने, नए मसाइल से हम नबर आजमा हो सकें। इस हफ्ते के प्रोग्राम में BC में जो फायर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। फायर इमरजेंसी जो है वो बहुत अलार्मिंग तौर पर बहुत इलाकों में हुई है। पिछले साल जो है, जैसे लिटन के नाम से एक शहर है, वो पूरा शहर जल गया था, अभी तक उसमें रिकंस्ट्रक्शन का प्लान ही हो रहा है और लोग वहाँ से भी डिस्प्लेस हैं। इस दफ़ा BC में वेस्ट कोलोना जो है वो, उसमें जो है घर जल गए हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह हवाई में भी इसी तरह हुआ, पॉश इलाके जल गए और इसी तरह लॉस एंजलिस में भी कुछ पॉश इलाकों में 2 साल पहले इसी तरह की आग लगी थी। ये हम
जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं बीसी के फॉरेस्ट मिनिस्टर ब्रूस रॉल्स्टन से हमने डिस्कस किया और हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। और हम एक और भी सवाल छोड़े जा रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिटीज़ को फंडिंग दी है और वो हाउस टैक्सेस के मामले में $90 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हुई है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर जो है उन्हें किस तरह से रिलीफ मिलता है। और अगले कुछ आने वाले प्रोग्रामों में हम ज़रूर जो सिटी गवर्नमेंट है हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उनकी जो 90 मिलियन का फंड है वो किस तरह से डिस्बर्समेंट हो रही है उसकी, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से जो है वो नज़र आए टैक्सों की कमी की सूरत में। नाज़रीन, वेदर चेंज होने को जा रहा है यहाँ पे, और पिछले साल भी हमने बेइंतहा बिजली के और गैस के बिल दिए हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में है बिजली गैस के बिलों की, वो सूरत हाल यहाँ कनाडा में भी आए। और कनाडा में वैंकूवर बीसी में ख़ास तौर पे बिल जो है वो इंतहाई हायर नंबर पर चले गए। तो वैंकूवर की सरगर्मियों में हम आपको वैंकूवर की जो सरगर्मियां हैं, सरे की ख़ास तौर पे सरगर्मियां हैं, एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सरे में रहती है। अफगान रिफ्यूजीज़ के लिए अफगानिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन कनेडियन अफगानीज़ ने एक यहाँ पे वेलकम तकरीब की, जिसकी सरकर्दा जो थी वो नसीमा नतोश थी, जो कि यहाँ पे उसका नसीमा नतोश जो है उन्होंने सिटी का इलेक्शन भी लड़ा है। और वो उन्होंने ये कदम उठाया कि रेफ्यूजीज़ को जो वहाँ से आए हैं, डिस्प्लेस मुल्कों से आए हैं, और उनको यहाँ पे किस तरह से रिहैब किया जाएगा। नाज़रीन, दुनिया भर में रेफ्यूजीज़ जो हैं वो जिस तरह से डिस्प्लेस होते हैं चंद पावरफुल मुल्कों की गलत सोच की वजह से, वहाँ के रिजीम्स को हिला देना, और उसके नतीजे में जो लोग वहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं, फैमिलियाँ डिस्प्लेस होती हैं, अपने एंसेस्ट्रल होम जो है वो छोड़कर वो दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। और यहाँ पे न्यू सेटलमेंट एक रियली वाकई एक उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। और मसले के साथ साथ एक ऐसा चैलेंज है उनके लिए कि वो नए मुल्कों में आकर यहाँ के तहजीब व तमद्दन के साथ जुड़ना, और वो तहजीब व तमद्दन जो ख़ास तौर पर इस्लामी इक़दार से मुनाफी हैं, उनमें किस तरह से मिलना है। क्योंकि यहाँ की सोसाइटी में ख़ास तौर पर जो है वो किसी भी रिलीजन को वो कोई तवज्जो नहीं देते, और कहते हैं कि कनाडा जो है एक नॉन रिलीजियस कंट्री है, लेकिन उसकी आड़ में जो है वो सेकुलरिज्म और ख़ास तौर पर एथियज़म और कंपैरेटिव रिलीजन्स की भी बात करते हैं। और वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि लोग जो भी अपने अपने मुल्कों से आते हैं वो अपनी रूट के साथ जुड़े रहें। तो देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। कलाम से एक बात कहना चाहूँगा कि जज पे ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजम तो है, मगर कई दफा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। We need more people like you. More people like me. Very good. Thank you very much. This is a good one. Thanks. I want to first acknowledge the Coast Salish peoples, including the Semiahmoo,
the Akatsi, the Kwiketlam, the Kwantlen, the Kakait, and the Sawasan First Nations on whose traditional territory we are on today. वैनकूवर में अपनों के दरमियान वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान क्या बात है वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान I am with Bruce Ralston, Minister for Forestry, and we have a question about your. Right now, BC is have an emergency, that is fire emergency, and firefighters are fighting. Our viewers want to know more about what BC government is doing and at what stage the fires have been eliminated or. Yeah, right now as we speak today, there's about 350 fires burning in British Columbia, and about 15 of those are what they call fires of note, where they're big fires that are a challenge and burning out of control. But we have 3,500 firefighters. We have a number of what they call airplanes and helicopters to fight that, and then we have supportive contractors who also bring equipment and other methods for fighting fires. So it's been a tough season, and in fact in this season 2 firefighters have died. A young woman aged 19 died in Revelstoke, and a young man died in northeastern British Columbia. He's aged 24. So it's been a very tough season. The fire service there's no limit to the budget that they have. We're prepared to support them, and we're making progress, but it's some of the reasons for the bad season are, one is the climate is changing. I think everyone recognizes that. Secondly, as a result of climate change, we're in an era where there's unprecedented drought. That is, where there's no water, it's very dry. 4/5 of the province is at what they call level 4 or 5 drought level. So you got a dry province, you've got not a lot of rain, you've got lightning strikes. Most of the fires are caused by lightning strikes. It's been a very tough season. Yeah, it's been a very tough season also. I have another question about what I'm thinking about is the people who lost their lives, or were they volunteers, or were they employed by somebody? The two young people that you speak of, one of them was a member of the BC Wildfire Service. Although she was 19, it was her 3rd season working. And the young man was working with the contractor. I went to his funeral up in Penticton. Oh, I see. So he was working for a contractor that was helping fight fires in the far northeast of the province, up near Fort St. John. Okay, we are sorry for that, the lives we are lost, and the personal properties and the infrastructure is lost in BC, and we are sorry for that. Yeah, my next question is, besides the displaced people, there are lots of thousands of people and families have been displaced, and what the government is doing for them, and to rehab them, and their losses, how they will be covered and all that.
Well, people who are under what they call evacuation orders, that they're been told by law that they have to leave their home or their business immediately. But they have been provided with through the emergency services societies, and there's a number throughout the province. With temporary accommodation, with food, some money for clothing, and getting themselves back on their feet. And for example, the Premier and I toured a evacuee camp in Kamloops where there's 300 beds, more on a construction camp style. Right. So, and the moment it was open, we started filling it up with people from the Shuswap, so they got this place filling up. So there are the Minister of Emergency Services and Climate Resilience, Colin Law. That's what her ministry is charged with, and they do that work. And a couple of days ago, given the numbers, there were I think 20,000 people given evacuation orders in the Okanagan. That's a lot of people to absorb. But, that's right, yeah. But that's all been worked through, I think, for the most part, and people have been placed. We put in effect an emergency order and people were very cooperative with this, to say hotels and motels had to give their rooms to, and the government paid for them, to evacuees. And so we did that. That's all. We're through that now, and those orders have been taken off. But people were very cooperative. We told people that we didn't want them to go to the Okanagan during that period of time. But those orders have come off now as of August 25th. At the same time, we have we call it atmosphere problem. I can see smog here too, and there are lots of health problems as well. So, and also I have another question about the people displaced from the Northwest Territories, and are they, will BC accommodate them, or they will stay in their province? Well, there was some emergency evacuations. The Minister of Health addressed this. Not big numbers, but I think maybe in long-term care in Yellowknife, I think there were about 60 people who came to Vancouver. They were flown here. So, they've been placed, and I think once it's safe to return, the idea is that they will return. That's kind of what we do. Provinces and territories help each other out depending on who needs the help. And that's part of what makes the Canadian Federation work. Yeah, okay, that's what it is, the Canadian Federation. I have lots of questions about where we are suffering here with the city taxes increase and lots of other issues. We'll talk later on, I guess. Sure. Yeah. So, because I think just when you're talking about city taxes, the BC government did give $1 billion to municipalities. In the case of Surrey, we gave $90 million to the city of Surrey in the budget process about 3 or 4 months ago. Yeah. So $19 million, which is a lot of money. Yeah, it's a lot of money, but I see that the gradual increase of the taxes is not reflecting on the so we need I will leave that discussion about municipal taxes to the municipal corporations. Okay, I think I will talk to them about it, and thank you very much. Keep watching DAPTV. Thank you. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद यहाँ पे सरे में डाउनटाउन में मस्जिद उमर इब्न खत्ताब में जो अफगान रिफ्यूजी आए हैं उन्हें वेलकम करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। हम आपको इसकी झलकियाँ दिखाएंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Companions passed away. We know about the Maliki madhab. The Maliki madhab, one of the main kind of proponents of that was Imam Malik. What did Imam Malik say? He says, العلم شجرة أصلها بمكة وأغصانها بالمدينة وأوراقها بالعراق وثمرتها بخراسان. This is mentioned in his book Taqib al-Madarik. It's written by one of his famous students, Qadi Iyad. He says, knowledge is a tree. The roots of that tree were obviously in Mecca, where Islam began.
The branches of that tree of knowledge were in Medina, because obviously that's where the Prophet, peace be upon him, migrated. The leaves of that tree of knowledge were in Iraq, because obviously the Prophet, peace be upon him, sent the majority of his most knowledgeable students to Iraq. But the fruits of that tree, وَثَمَرَتُهَا, where are the fruits of that tree? In Khurasan, the region we call home. This is high praise, my respected friends. It's very high praise. What do we have to do about this now? This is the thing. We always, human beings, we are individuals, al-hayawan al-natiq. Human beings, what separates us from animals, aside from our physical appearances, we're able to deliberate and think and problem solve. Our problem solving skills are much superior than other mammals and other creations. So now based on that, let's think about it. We're living in a day and age, we see what's going on outside. The things that are being spread, the things that are being taught in public schools today. I don't want to get into the details of my respected friends. We know what we're talking about. The things that are going on outside, the things that our youngsters are going through, our brothers and sisters are going through. Where is the safe haven to protect us from these places? Where is it? Allah Azza wa Jalla himself, he tells us where it is in the Quran, in Surah Al-Tawbah. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Only those people who have Iman and who do righteous deeds, only those people populate the masjid. Imam Fakhruddin al-Razi, he writes about this ayah. Imam Fakhruddin al-Razi, the great scholar from Herat, the great philosopher, the great professor, he says, when a person builds a connection with the house of God, protection for them is guaranteed. The Prophet, peace be upon him, further says this, وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ بُيُوتَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ بُيُوتَهُ. Allah has promised His protection for the person who has clung to the house of Allah. This opportunity to thank each one of you for being here tonight. We all gathered here tonight to celebrate our oneness and promote a culture of tolerance, acceptance, and because we are all immigrants, refugees, we begin as a refugee here, and Sweden is a diversity, and diversity is our strength. I would like to acknowledge some elected officials and our media personality. I would like to acknowledge and welcome Jenny Sem, member of the legislature and the former Minister of Citizen Services. Also, I would like to welcome Pankaj Singh from Red FM. Welcome, Atif. I would like to welcome Tariq Kayani, brother Tariq Kayani from Suri, Pakistan. Thank you so much. Brother Iftikhar from DAPTV, Pakistan. Mr. Maliki, our General Consulate of Afghanistan. Dr. Masood, and also BC Muslim Association President and Board of Directors. Right now, I would like to ask Jenny Sem to come and say a few words. Assalamu alaikum. And I want to thank Naseema and her family for including me in tonight's celebrations and welcoming. Today is a very special day. This country gives us opportunities that we can be successful when we do it the right way. And absolutely, never forget your roots, never forget your native language, and never forget your culture. And for all, I still speak Punjabi even though I left India when I was 9 years old. I still read it and I write it. Because even though Canada is my country, it's my home. The humans, our main ingredient is turab. Our main ingredient is coming from dirt. So if we're not like dirt, then that means we're far from our human reality. Far from our human reality, far from what it means to be a human being. You have the famous Maulana rahmatullahi alayhi. He says, "Nashayat bani Adam al-Aqsad ke dar sar konad kibr tundi u baz." As human beings, it shouldn't be that they have arrogance
It shouldn't be that they have pride. It shouldn't be that they have a superiority complex. Why? Because we come from dirt, my respected friends. Now what does it mean to be khaki? Let's analyze and assess dirt. Dirt, they come together in grains. One grain of dirt, it's useless. One grain of dirt, you cannot grow anything with it. Grains of dirt are only beneficial when they come together. This is the key here. Dirt is only beneficial. You can only grow something from dirt when many grains of that dirt have come together. Human beings are the same thing, my friend. Every single one of us, we are like grains of soil. We are like grains of soil. By ourselves, maybe we can do something. Maybe we can do a little bit. But we can never reach our full potential as human beings until we come together. This is very important, my respected friends. Allah asks, what does it mean to be an ummah? We always talk about ummah, ummah, ummah. What does it mean? Let's look at the word, the epistemology of ummah. The word ummah comes from amma ya ummu, or ummun. What does ummun mean in Arabic? Yani, meaning come from one mother. Every single one of us are brothers and sisters in faith. Every single one of us should have that love, respect, and kindness for one another. We should want fight for each other. Allah Azza wa Jalla in Surah Al-Hujurat, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. The word ummah coming from the word mother. Ikhwa, yani we come as together as brothers. The verses of the Quran are plenty, my respected friends. Thank you. I hope to hopefully catch up with many of you, socialize. فيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. कहना चाहूँगी कि वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान।